Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन विषय रे पढ़िबा देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रो हमें जो पोस्टुलेट्स देखिला सेतिरो गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस हमें देखिया को पाइला जे जहाँ सब इवेंट्स आम चारिपटे घटुची एक्चुअली सेटा एब्सोल्यूट नुहे ओके सो ए जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहूची जे देयर इज नो एब्सोल्यूटनेस ऑफ स्पेस ओके रादर ए जते सब इवेंट्स ऑल आर रिलेटिव विथ ईच अदर ओके या को बुझिया पई गोटे एग्जांपल आमे नबा गोटे बॉडी रो लेंथ को आमे मेजर करिबा ओके दुईटा जगह रो मेजर करिबा गोटे हला रेस्ट फ्रेम रू आ गोटे मूविंग फ्रेम रू सच दैट इट इज मूविंग with a velocity comparable to the speed of light okay so देखा जीवो जे दुईटा जाको मेजरमेंट जो आमे करिबा ताले लेंथ टा अलगा अलगा आसीबो जो मेजरमेंट मूविंग फ्रेम रो करा जीवो जदि सेटा मूव करूची विथ comparable velocity of light ताले सेही लेंथ टा कम आसीबो एज कंपेयर्ड टू द मेजरमेंट बाय द रेस्ट फ्रेम ओके ताकू ही हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहिबा सो क्लासिकल थ्योरी जोटा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रे हमें देखुतला जे ऑब्जेक्ट रो लेंथ टा समान रहउतला फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स से रेस्ट फ्रेम रे रहू कि मूविंग फ्रेम रे रहू किंतु स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या को रिजेक्ट कला से कहूची कोन ना जदी ऑब्जर्वर टा मूव करूची विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ताले यार लेंथ टा एबे चेंज ही जिवो रिलेटिव ही जिवो ओके या को एबे हमें प्रूव करिबा सो फॉर दिस लेट अस कंसीडर two inertial frames. First one is the rest frame S, second one is the moving frame STS, which is in relative motion and it is moving with a uniform velocity v along the positive x-axis with respect to s. Okay, तो प्रथमे इनिशियली ये जो STS फ्रेम टा मूव करिबा पूर्वरु okay suppose the observers which are O and O dash okay these are two observers in the inertial frame S and S dash and they are at rest with respect to each other okay with their origins coinciding at some time okay now they compare their measuring rod suppose seman ko pakhre gote kichi measuring rod अछि semane ebe kon karibe na gote body ame nei jiba AB तार लेंथ को एमाने मेजर करिवे such that this body AB जोटा हमें हॉरिजॉन्टली रखिछु पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ओके काई के एमती रखिछु सेटा आकु जानिबा ओके जदी एमती वर्टिकल रखितिले अलगा आस्थानता ओके से जिंस को हमें देखिबा तापरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखि देबा जे यार जो हॉरिजॉन्टल लेंथ को माने मेजर करिवे आउ रेस्ट पोजीशन रे माने सपोज मेजर करले जे यार लेंथ आसुची L0 ओके नाउ S dash एबे मूव करिबा स्टार्ट कला ओके and it is moving along the positive x-axis with a uniform velocity v okay now एबे ए जो ऑब्जेक्ट को हमें रखिछु को फ्रेम रे ना मूविंग फ्रेम S dash रे ताले ए ऑब्जेक्ट भी एबे मूव कला okay now the observer in the frame S dash he is measuring the rod along x-axis with its left end that is your point A suppose यार पोजीशन को ऑब्जर्वर O डैश मेजर करला केते ना x1 डैश सिमिलरली पॉइंट B रो यार लेंथ को मेजर करला x2 डैश ओके ताले लेंथ केते ही गला ए जो ऑब्जर्वर O डैश मेजर करला दैट इज L0 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश व्हिच इज योर AB ओके यार लेंथ टा अच्छा तापरे एबे कोन करिबा जो ए ऑब्जेक्ट AB जोटा मूव करूची विथ द मूविंग फ्रेम S डैश
तार लेंथ को एबे ए जो रेस्ट फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर एबे मेजर करिवो ओके विथ तार पाखरे जो मेजरिंग रॉड बा मेजरिंग यार्डस्टिक अच्छी ओके सपोज ये जो पोजीशन टा एबे मेजर कला ऑब्जेक्ट ए बी पाई सपोज यार पॉइंट जो एंड पॉइंट आमे देखिबा ए पॉइंट पाई x1 मेजर कला बी पॉइंट पाई x2 मेजर कला ओके ताले ए लेंथ टा एबे अलगा आसीबो सपोज याको आमे कहला l सो l रो वैल्यू हेबो केते ना x2 minus x1 okay so this is the length of the object lying in the moving frame as measured by the observer in the rest frame okay so जेहेतु एज टेस्ट मूव करुछि to the right along the positive x-axis with a velocity v therefore एबे हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जोटा पाई थिला पोजीशन कोऑर्डिनेट से हिसाब रे देखो x1 डैश आउ x2 डैश रो वैल्यू हमें अकॉर्डिंगली ए हिसाब रे पाउथिला लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ताले x2 डैश माइनस x1 डैश रो वैल्यू आसीगला दिस मच अच्छा नाउ इन ऑर्डर दैट द रेस्ट फ्रेम s जो अच्छी एस एस फ्रेम रे थिबा जो ऑब्जर्वर से लेंथ जदि मापिब ऑब्जेक्ट ए बी रो आउ एस टेस मध्य तार मेजरमेंट जदि करूची नाउ एठी गोटे जिनस मन रखिबार अछि जे जो एंड पॉइंट्स को मेजर करला बेल को बिकॉज रॉड टा देखो तुम पुणी फिगर को आस ए जो रॉड ए बी एटा देखा बुझ एटा मूविंग फ्रेम रे अछि सो रेस्ट फ्रेम रे थिबा ऑब्जर्वर जदि याको मेजर करिवो ताले दुईटा जाको एंड पॉइंट्स जो मेजर करूची सांगे सांगे गोटे टाइम रे ही मेजर करबा को पड़िबो जदि अलगा अलगा टाइम रे मेजर कला दैट मीन्स ये किछि बाट आकु पड़ी जाइथिबो ओके दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ओके गोटे ही पार्टिकुलर टाइम रे ही से पॉइंट ए आउ पॉइंट बी माने x1 आउ x2 मेजर करबा को ही पड़िबो दैट मीन्स एठी t1 मस्ट बी इक्वल टू t2 हबो ओके से जिनसटा देखो एठी लिखा हैला सो एठी एका संगे मेजर कला ओके साइमल्टेनियसली the measurement of the object is done that is at one end and same time so t1 must be equal to t2 ताले x2 dash minus x1 dash रो वैल्यू सिंपली आसीगला x2 minus x1 by square root of 1 minus v square by c square okay now we can write the proper length because एठी देखो x2 dash minus x1 dash it is nothing but your L0 okay it x2 minus x1 it is your L so proper length होची L0 proper length कहले कोन गोटे ऑब्जेक्ट रो it is defined as the length which is measured by a scale at rest with respect to the object माने तमरो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे तमे मेजर करूछ गोटे ऑब्जेक्ट को से इंस्ट्रूमेंट आउ से ऑब्जेक्ट दुईटा जाक परस्पर सहित रेस्ट रे जदि अछंती आउ जदि मेजरमेंट कला हमें लेंथ देन इट विल बी द प्रॉपर लेंथ और एक्चुअल लेंथ ओके नाउ एठी जो रिलेशन जेमती कहली x2 डैश माइनस x1 डैश एटा ही हमर एक्चुअल बा प्रॉपर लेंथ हेबो ऑब्जेक्ट रो एज मेजर्ड बाय s डैश आउ यार वैल्यूटा हो L0 ओके आउ ऑब्जर्व्ड लेंथ जोटा देखा पाइला हमें ऑब्जर्व्ड लेंथ दैट विल बी योर L दैट इज x2 minus x1 so L0 equal to L by square root of 1 minus b square by c square or L is equal to L0 into square root of 1 minus b square by c square this is the required relation ओके जोटा कि लेंथ कंट्राक्शन को देखौछि केमती लेंथ कंट्राक्शन हैला बिकॉज देखो हियर व्हेन वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मूविंग फ्रेम s dash which is moving with the velocity v with respect to s then the observer finds that the length is contracted by a factor 1 minus b square by c square नोट करो ए जो स्क्वायर रूट रे थिबा ए टर्म टा अछि या सहित मल्टीप्लाई हेछि दिस टर्म is actually less than 1 okay so 1 minus something होची so it is obviously less than 1 यार maximum value केते ही हेबो यार maximum value हेबो जते बेले आमे एठी v को जदी equal to c पके दबा okay
सॉरी v को इक्वल टू 0 पकेदबा ताले एठी 1 माइनस 0 हो जिवो आउ 1 आसीबो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू आ मिनिमम वैल्यू केते बेले हबो ना जेते बेले v रो वैल्यू इक्वल टू c हबो ओके सेटा भी आकु देखिबा सो दिस कॉन्ट्रैक्शन जो देखा गला माने लेंथ टा मूविंग फ्रेम जदि गोटे अच्छी गोटे वस्तुटा मुव करुच्ची ताहले जदि आमर तार लेंथ आम मेजर करवा ताहले लेंथटा कमी गला भलिया लगुच कंट्राक्शन हो गला भलिया लगुच एक्चुअली दिस कंट्राक्शन इज रेसिप्रोकाल कौन ना द ऑब्जर्वर इन द सिस्टम एस टेस also finds the length of the object lying in the system S whose proper length is L0 then also L is equal to L0 into square root of 1 minus v square by c square माने गोटे फ्रेम मूव करुची आ गोटे फ्रेम रेस्ट रे अछि जदि तमे मूविंग फ्रेम रु रेस्ट फ्रेम रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि तार लेंथ मापिबो तो भी सेही समान रिजल्ट ही पाइबो ओके सो लेंथ टा जहाँ हेले भी कॉन्ट्रैक्ट करिवो जदि हमको देखा जाउछि जे गोटे बॉडी मूव कला भलिया ओके अच्छा दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड योर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन or space contraction. And it was suggested by Lorentz and Fitzgerald. So it is also called Lorentz-Fitzgerald contraction. Okay. Thus, according to the theory of relativity, the length of an object is not absolute, but rather it depends upon the relative motion of the object with respect to the observer. ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି it will be maximum when the object is at rest. So v equal to 0 ହେଇଗଲେ maximum ହେଇଯିବ यार value. Okay. So in other words, the length of an object measured in a frame which is moving with respect to another observer is smaller. Okay, contraction ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ତାର length କମି ଗଲା smaller than the length of the same object as observed by the stationary or rest frame. ओके अच्छा जो स्टार्टिंग रे गोटे कहूली जे हॉरिजॉन्टल पोजीशन रे आमे रखिछु जदि वर्टिकल रे रखि देले कोन हेई थांता ओके सपोज द रॉड इज placed parallel to either y axis or z axis so that it is perpendicular to the direction of motion now which is along x axis so जो फ्रेम आमे देखुतला यार x axis आडको ई फ्रेम टा मूव करथला विथ वेलोसिटी v एबे रॉड को आमे parallel to y axis or z axis एमती रखिदबा ओके ताहले एबे यार लेंथ जदि आमे मेजर करिबा विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम s सपोज फर्स्ट पैरेलल टू y एक्सिस जदि कहबा ताले L0 इक्वल टू y2 माइनस y1 आ विथ रिस्पेक्ट टू s डैश L इज इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश हबो आ जदि पैरेलल टू z एक्सिस अछि ताले मध्य सिमिलरली L0 इक्वल टू z2 माइनस z1 एंड L इक्वल टू z2 डैश माइनस z1 डैश हबो ओके एबे आमे कोन करिबा लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिबा सो एठी देखो गोटे जिंस मने रखो जो डायरेक्शन रे এই ফ্রেমটা মুভ করছি এটি এক্স এক্সিস রে সো লরেঞ্জ ইনভার্স ট্রান্সফর্মেশন রে আমি দেখুতিলা যে বাকি দুইটা এক্সিস রে কোঅর্ডিনেट्स अनचेंज्ड ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲା y डैश इक्वल टू y आस्तुला z डैश इक्वल टू z आस्तुला ओके सो एठी अकॉर्डिंगली L0 which is y2 minus y1 so y2 is equal to y2 dash and y1 equal to y1 dash put कर दबा so it is nothing but L so L0 equal to L हला और सिमिलरली L0 रो वैल्यू जदि आमे z एक्सिस सहित पैरेलल भी जदि देखिबा ताहले मध्य z2 इक्वल टू z2 डैश z1 इक्वल टू z1 डैश हबो एंड L0 इक्वल टू L आसीबो दैट मीन्स लेंथ which is perpendicular to the direction of motion remains unchanged this is a very important thing okay जदि हमरो लेंथ टा along the direction of motion अछि ताहले ही जाई कि contraction हबो जदि perpendicular अछि ताहले contraction हेबो नाही it will be unchanged okay now let us see some of the conclusions of this length contraction first point रे according to Einstein this contraction is not an absolute property of matter which is in motion and याकू absolute बोली कि actually Lorentz प्रथमे भाबिथिले किंतु एटा नुह rather it arises due to the ways in which the observers define their simultaneity एटी simultaneity माने कहि रखुची सपोज दुईटा ऑब्जर्वर को आमे नेबा गोटे ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम रे अछि आ गोटे ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम रे अछि सपोज से माने गोटे इवेंट को देखुचंती
ओके दुईटा इवेंट को देखुं आउ सपोज रेस्ट फ्रेम रो ऑब्जर्वर देखिला जे दुईटा जाक इवेंट एका संगे घटुची सो देयर इज साइमल्टेनिटी किंतु मूविंग फ्रेम रो ऑब्जर्वर देखिला जे ना दुईटा इवेंट अलग अलग समय रे घटुची ओके एटा हेई पारे जेतेबेले मूविंग फ्रेम रो ऑब्जर्वर मूव करुची कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट ओके किंबा उल्टा भी हेई पारे मूविंग फ्रेम रो ऑब्जर्वर को दुईटा इवेंट एका संगे घटुथिबार देखा जाउथिबो किंतु रेस्ट फ्रेम रो ऑब्जर्वर ताकू अलग अलग टाइम रे देखिबो सो दिस इज योर साइमल्टेनिटी ओके सो साइमल्टेनिटी चेंज हो जाउची तेणु करी एठी जो लेंथ कंट्राक्शन मध्य अलग अलग यार रिजल्ट देखा आम पाइबा सेकेंड पॉइंट रे since the square of the velocity v appears in the formula so the contraction is reciprocal jemti ame discuss kala that means if two identical rods they are at rest and one is in rest frame s and the second one is the moving frame sts then each observer will find that the other rod is shorter than the rod of its own system okay गोटे ऑब्जर्वर को जदि देखा जाउची जे बॉडी माने से रडटा जदि मूव करी करी जाउची दैट मीन्स तार लेंथटा कमी गला भलिया ताको देखा जीवो एज कंपेयर टू द रड व्हिच इज प्लेस्ड इन हिज ओन फ्रेम ओके थर्ड पॉइंट रे कहूची जदि एई वेलोसिटी v इक्वल टू c हे गला दैट मीन्स 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर हे जीवो केते 1 माइनस 1 सो 0 आसीबो और l हे जीवो इक्वल टू 0 दैट मीन्स the rod which is in motion with the velocity of light this is a very important point okay jodi light ro velocity re rod ta move karuchi that means it appears to have contracted to a mere point because यार length टा कमी कमी की पूरा जीरो हो गला माने गोटे पॉइंट को आसीगला okay but it is actually impossible so this shows that no material body can ever move with a velocity that is equal to that of your light okay अच्छा 4 नंबर पॉइंट को देखो एबे এই जो contraction आमे देखिया को पाउचु it takes place only in the direction of motion এটা भी आमे डिस्कशन करि सारचु and there is no contraction in the direction perpendicular to it hence for instance जदि गुटे आमे स्फीयर को देखिबा ताहले एटा हमकु देखा जिवो जदि एटा मूव करूची गोटे मूविंग फ्रेम रे अछि ताहले एटा स्फीयरिकल न देखा जाय कि गोटे इलिप्सॉइड भलिया देखा जिवो ओके सो इट विल बी appearing like an ellipsoid to an observer at rest okay thus the space which is reduced to a measurement of the length in physics and the geometrical shape of the objects cannot be absolute but rather it will be relative आ ए जो इलिप्सॉइड भलिया देखा गला ओके आकु गोटे मो एग्जांपल भी बतेइबी जो भागटा लेंथ कमी जिवो सेटा हेइथबो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आ जोटा परपेंडिकुलर हेइथबो सेटार लेंथटा अनचेंज रहिबो ओके तापरे एठी 5 नंबर पॉइंट यूजिंग द फेनोमेनन of length contraction we can explain the negative results of Michelson and Morley experiment ओके याकु एबे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स जो देखुतिला माइकेलसन मोरली एक्सपेरिमेंट रे ताकु एबे हमें एक्सप्लेन करि परिबा देखो इक्वेशन 6 रे हमें माइकेलसन मोरली एक्सपेरिमेंट नोट देखिबो सेठी जो इक्वेशन 6 रे हमें टाइम t1 रो वैल्यू पाइथिला for the longitudinal journey of the beam तार वैल्यूटा एतिकी आस्तला ओके दिस मच सो एठी हमें जो ई d ओके दिस लेंथ याकु एबे रिप्लेस करि परिबा विथ d into square root of 1 plus v square by c square ओके सो एठी याकु जदि हमें पुट कर दबा एक्चुअली एठी टी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि दिस शुड बी 1 minus v square by c square ओके एटा टी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि सो एठी एटा रिप्लेस कर देला d into this much ता सहित एबे एठी 1 plus v square by c square को मल्टीप्लाई करिबा ताले एबे कोन हबो ना हायर टर्म्स को हमें जदि नेग्लेक्ट कर देला माने v to the power 4 by 2c4 याकू एटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी आसीबो याकू नेग्लेक्ट कर दी परिबा सो 2d by c into 1 plus v square by 2c square यार वैल्यूटा आसिला t1 रो वैल्यू सो देखिबो जो t2 रो वैल्यू पाउथला हमें फॉर द वर्टिकल जर्नी जोटा इक्वेशन 7 रे थिला सो तार वैल्यू सहित 81 रो वैल्यू समान आसीबो thus the motion through ether causes the shortening of the arm of the interferometer which is parallel to the direction of motion okay and the extent of shortening
being sufficient to equalize the light paths. Okay, so that it explains, therefore there is no appreciable displacement of fringes. Fringe गुड़ार किसी भी appreciable displacement हो पारु नहीं, ताकू ये भल भाव explain कला because t1 equal to t2 आसीगला. ओके, तापरे एबे गोटे एग्जांपल आमे देखिबा जे केमती गोटे वस्तु जदि सेटा मूव करूची तार शेपटा को हिसाब रे आमे देखिबा को पाइबा. एठी दुईटा बॉडी रो एग्जांपल नेची, गोटे हला सर्किल आ गोटे हला स्क्वायर. ओके, सपोज दे आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ताले क्वेश्चन एठी कहूची जे हाउ विल दे अपीयर टू ए स्टेशनरी और रेस्ट ऑब्जर्वर. ये बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा एग्जाम रे पड़ीची. सो आमे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन रो फार्मूला पाइला L is equal to L0 into square root of 1 minus v square by c square. अब ये जो contraction टा हमें देखिए को पाऊचु, it is along the direction parallel to the direction of motion and here it is x axis. Further जदि हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखिबा ताले एठी y और z coordinates unchanged रहउची, so there is no length contraction in the direction perpendicular to the direction of motion. आमे जेमती देखिला ऊपरे. so एबे जदि गोटे स्क्वायर रो एग्जांपल नबा ताले if it is moving then it will appear as a rectangle. और रेक्टांगल को हिसाब रे हबो तार सेही साइड टा कमी जिवो बा कॉन्ट्रैक्ट करि जिवो which is along the direction of motion, that is x axis. Similarly गोटे सर्किल जदि देखिबा it will appear as an ellipse, okay, with its minor axis along the direction of motion. याको फिगर रे देखो, सपोज एठी फर्स्ट फिगर देखो, एटा होची रेफरेंस फ्रेम which is at rest, जोटा कि कहूची जे एटा होची गोटे स्क्वायर आ एटा हला सर्किल. किंतु जदि रेफरेंस फ्रेम टा इन मोशन अछि एंड इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v along x axis, ताले देखो यार जो साइड टा पैरेलल रहउची, सपोज वेलोसिटी एई पटे. ओके, एई पटे जो वेलोसिटी दैट मींस एई साइड दुईटा यार लेंथ टा कमी गला. ओके, डॉटेड लाइन देखुछ ओरिजिनली थिला, एटा कमी की देखो एटा आसीगला तुमरो ऑब्जर्व्ड लेंथ, सो इट विल बी लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल. ओके, सिमिलरली सर्किल टा देखो तारो एबे इलिप्स बढ़िया यार शेप आसी जाईची एई साइड टा. ओके, सर्किल रो एई पट साइड टा व्हिच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एटा कमी गला आउ एटा आसीगला तुमरो माइनर एक्सिस एंड इट इज लुकिंग लाइक एन इलिप्स. ओके, सो आमे देखियो को पाइला व्हेन दिस वेलोसिटी v is approaching towards the velocity of light, then this length contraction is occurring. But if the value of v is very small as compared to c, then you can neglect the value of v square by c square. Therefore from equation 1 the length L is equal to L0. Okay, so for ordinary velocities the length of an object can be taken to be constant, or you can say there is no length contraction for ordinary velocities. Okay, so this is all about your length contraction. Thank you.